हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अकाउंटिंग टर्म्स लाइक कैपिटल्स, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स। वो सारी टर्म्स हमने देख ली थी, टर्मिनोलॉजी जो थी वो हमने देख ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आगे की सारी टर्म्स। तो पहले है पेमेंट। पेमेंट मीन्स मनी पेड for any business purpose transactions are known as a payments. Clear? Payments means any amount paid for taking the any benefit, taking the any services, that is called payments. There are two types of payments: capital payment या capital expenditures. पेमेंट या एक्सपेंस भी बोल सकते हैं उसका, तो कैपिटल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, दिस पेमेंट इज नॉट रेगुलर नेचर्स. इट नॉट रेगुलर, डेली नहीं होगा, रूटीन में नहीं होगा, आपका रेगुलर नहीं, लाइक परचेज ऑफ एसेट्स, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंसेस. परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट frequently. This is capital expenditures. The redemption of debenture also is capital payments. Clear? Capital expenditure and capital payment both are same. Now in revenue expenditures, the flow of the payment would remain constant. Constant रहेंगे आपके. For this payment, profit or loss is determined. In this category, payment of salary, wages, telephone expenses, advertisement expenditures are including. Clear? Now next is goods. ना देखो, परचेज और सेल्स समझने से पहले हम थोड़ा गुड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न समझने के लिए इजी हो जाएगा. तो द आइटम विच ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज नॉन एज अ गुड्स. द आइटम विच ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज नॉन एज गुड्स. द आइटम विच परचेज फॉर सेल्स, प्रॉफिट or processing by the business or used in the manufacturing of certain other goods of raw material are known as goods. In other words, goods are the commodity which the business deal. जिसका हम डीलिंग कर रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए गुड्स है. लाइक फर्नीचर का डील, फर्नीचर स्टोर है मेरा, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है तो इलेक्ट्रॉनिक के जितनी भी गुड्स है, आप आइटम्स हैं, वो सिर्फ मेरे लिए सब क्या है, गुड्स है. क्लियर? नाउ डेफिनेशन ऑफ परचेज. व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द ट्रेडर्स ऑन कैश और ऑन क्रेडिट आर नोन एज अ परचेज. परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट परचेज इन अकाउंटिंग टर्म्स. समझिए, व्हेन गुड्स रिसीव्ड बाय द ट्रेडर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट आर नोन एज अ परचेज. अगर हम गुड्स बॉट कर रहे हैं, goods received हो रहा है on cash or credit, are known as a purchase. Now sales, when goods given to the customers on cash or on credit are known as a sales. Customer को दे रहे हैं हम, goods दे रहे हैं on cash or on credit are known as a sales. Sales return of the sales, never sale of assets. Purchase return, when the goods return to sellers from the part of purchase of goods may be due to the unnecessary, excessive or defective supply of goods. Purchase return also known as a return outwards. Clear? Sales return, when goods return from customers a part of sale of goods, it may be due to the unnecessary, excessive or defective supply of goods. Sales return is also known as a return inward. Stock means goods remain unsold in the business at the end of accounting year. At the end of the year, stock goods is known as a closing stock. Means unsold goods at the end of the accounting year is known as a closing stock. If it is beginning, then it's called opening stock. Clear? Current year closing stock, coming year के लिए क्या हो जाएगा, वो opening stock. आज का closing, कल के लिए opening. Clear? It should be always to keep in mind that a stock is valued at cost price or market price, whichever is less. Stock आ गया. चलो, revenue accounting means the amount is realized or receivables
फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एनी अमाउंट रियलाइज मीन्स पैसे मिलने चाहिए आपको, कन्वर्ट इनटू द कैश। आपका जो गुड्स है वो कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया कन्वर्ट? इन कैश। दैट मीन्स रियलाइज, रिसीव्ड हो चुके हैं आपको। और रिसीवेबल मीन्स रिसीवेबल है, सोल्ड कर दिया। कैसे सोल्ड कर दिया? ऑन क्रेडिट, आज नहीं मिले बट मिलने वाले, बट इज अमाउंट इज रियलाइज, मिलने वाली, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। It should be concerned with the day-to-day affairs of the business. It should also regular natures. For example, like interest, commission, rent are known as a revenue. Expenses, the amount spent or paid, or when a liability is created for the getting any benefits or services is known as expenditure. For example, purchase of land, paid salary are in expenditures. Income, when goods sold and services rendered by the business, any considerations received or receivable are known as is income. हम गुड सोल्ड करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे हमारे कस्टमर को, अमाउंट रिसीव हुई और रिसीवेबल है, आर नॉन एज इनकम। इनकम हमने देखा था आगे दो टाइप्स, दैट कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम मीन्स इट नॉट रेगुलर नेचर्स, रेवेन्यू इनकम इज अ डे टू डे इनकम। Loss means amount lost without getting any benefits is known as a loss. Loss means amount lost without getting any benefits. In other words, when business revenue expenses higher than revenue income is called loss. Means loss due to any benefit, हमको कोई benefit नहीं हो, loss due to fire, loss due to accidents, वो loss है हमारा। दूसरे वर्ड में अगर यहाँ पे बोला है कि revenue expenses ज़्यादा हो गए फ्रॉम द रेवेन्यू इनकम, तो वो भी लॉस ही है। प्रॉफिट और गेन, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज टर्म इज अ प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू ज़्यादा है, रेवेन्यू मीन्स इनकम ज़्यादा है, किससे? ओवर एक्सपेंस है, दैट इज अ प्रॉफिट। गेन मीन्स प्रॉफिट मेड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, व्हेन द सोल्ड गुड्स मोर देन कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट और गेन। डेटर्स, व्हेन गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट, the amount receivable from the customers is known as a receivables. The entire customers are known as a debtors. In other words, the term debtors represent the person or party who have purchased goods on credit from us. Simple language. Debtors represent the person or party who have purchased goods on credit from us. हम वो डेटर्स वो पर्सन है जिन्हें हमसे गुड्स बाय किया है, कैसे? ऑन क्रेडिट, तो वो हमारा डेटर्स बन गया। क्रेडिटर्स, द पर्सन टू whom the amount is payable for supplying goods or providing the service on credit is known as a payable, or in other words, such person known as creditors. The seller of goods on credit of the firm is known as a creditors. Receivables, any amount receivable from the outsider is known as a receivables. In this, debtors are not including in receivables. Payables, any amount payable to outsider is known as a payables. Creditors are not including in payables. Solvent, the solvent person firm, they are capable to pay their liabilities. Solvent person means or firm, they are capable to pay their liability आउट ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज, खुद के रिसोर्सेज है उसमें से वो कैपेबल है, दे आर पेइंग कैपेबल है फॉर पेइंग द लाइबिलिटीज, दैट इज अ सॉल्वेंट। मीन्स व्हेन देयर एसेट इज मोर देन लाइबिलिटी आर नोन एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंसी शो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। Insolvent the person, the firm is not capable to pay their liability. Insolvent हो गया, अब नहीं बोलते insolvent हो गया, they are not capable to pay their liabilities, ठीक, from the own assets, means the person or firm of asset less than the liabilities, the assets जो है वो liability से कम है, तो वो हमारी voucher means accounting transaction must be supported by the documents, means supported document है, documentary proof, supporting document, any documentary proof, supporting topic or documentary proof is known as a voucher. अगर बिल है तो बिल इज अ वाउचर, क्लियर, वाउचर।
डॉक्यूमेंट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग द टेकन द प्लेस। प्रॉफिट हमने देख लिया। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स is written document where the two parties, one is bills writer, another bills accepted। एक बिल्स ड्रॉन करेगा और दूसरा बिल्स एक्सेप्ट करेगा। जो बिल ड्रॉन करेगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है और जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए बिल्स पेएबल है। मीन्स where the bill writer acquired the right of receive the certain amount of per predetermined date on future, it become receivable। bills receivable is a bills writer, bills उसके लिए bill writer। bills payable, bills payable ऑपोजिट मैंने यहाँ पे बोला एज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट है। हम एक्सेप्ट करते हैं बिल्स, हम पे करेंगे इतना अमाउंट, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पे टू पर सर्टन अमाउंट फॉर एज पर द प्री डिटरमाइंड डेट इन फ्यूचर आर नोन एज ए बिल्स पेएबल्स। डिस्काउंट्स, सीजन है अभी, डिस्काउंट 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 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट्स, there is a discounts, clear, on purchase on sales। Many times from the total amount of purchase of sales as per the condition the certain amount of deducted at net amount is paid। like आप purchase करने के 10,000 है, 50% डिस्काउंट, 5,000 पेएबल, नेट अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो 5,000 is a discount। the discount is two types of discounts, one is trade discount and another is cash discount। trade discounts means अभी आप कोई भी स्टोर पे गए, वहां पे 80%, 50%, 60% डिस्काउंट, वो सबको अलाउ है, सबको अलाउ करेंगे। जितने भी कस्टमर आएंगे वो सबको वो डिस्काउंट बेनिफिट मिलता है, तो वो है ट्रेड डिस्काउंट्स। देखो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ बिजनेस पर्सन डिडक्ट द सर्टन परसेंटेज अमाउंट फ्रॉम द सेल प्राइस is known as a trade discount। trade discount is not recorded in the books, it is not an expense, it is not expense or not loss for seller or not benefit of to the buyers। cash discount, to attract the customer with the purpose to receive the quick collections। क्विक कलेक्शन हो गया, हमने क्रेडिट सेल्स किया, कोई क्रेडिट पे हमारे पास गुड्स परचेस करने आया, बट हमको बोलते भाई तो अभी पेमेंट करेगा तो और 5% डिस्काउंट्स, तो अट्रैक्ट होगा फॉर पेमेंट के लिए, तो हमारा कलेक्शन जो है वो इजीली रह जाएगा, क्विक कलेक्शन होगा। क्रेडिट, द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल अमाउंट is known as a cash discount। cash discount is recorded in the books after the deduction of trade discount। cash discount is determined। depreciation, depreciation means gradual and permanent reduction in the value of assets are called as depreciation। depreciation is an expense business, but it's not a non-cash expenses of the business, clear, is a certain rate of reducing rate। sure, now next, bad debts। bad debts means when we sold goods to the customers on credit, the such person become a debtors if they are not capable to pay their money due to the weak financial conditions, if amount is not collected even after necessary efforts, the amount which is not received from debtors are known as a bad debts। bad debt is not an expense, it's a business loss, it's a business loss। And now method of accounting, there are two methods of accounting, double एंट्री सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम। अभी जो हम करने वाले हैं पूरे 11th में 12th में, वो हमारी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैव ए टू इफेक्ट, वन डेबिट अनदर इज credit। every transaction have a two effect, one debit another is credit, therefore is known as a double entry system, double accounting systems, clear। next, Desinama system, this Desinama system is the original Indian accounting system। it is also known as a वही खाता पद्धति, is also known as a वही खाता पद्धति। डबल एंट्री की जो बेसिक बुक है, बेसिक बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम is a journal, and Desinama system the basic book is रोज मेल। आपको पता होगा कि दिवाली के दिन हम चौपड़ा पूजन करते हैं, तो उस दिन जो बुक यूज करते हैं वो है देसीनामा। रेड कलर की बुक आपने देखी होगी, तो वो रोज मेल
Clear? Roseman is satisfied with the requirement of cash book in journal. In देसीनामा सिस्टम हम कैश बुक प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक। द सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज वही खाता पद्धति या बही खाता पद्धति, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वही या बही खाता पद्धति। तो इन डबल एंट्री सिस्टम द बेसिक बुक प्राइम बुक इज जर्नल, और इन देसीनामा सिस्टम is a Roseman. Clear? Thank you.